come from old city sir. ओल्ड सिटी में सर मुसलमान नहीं, ओल्ड सिटी में हिंदू भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भाई भी है, सिख भी है, ईसाई सब रहते हैं सर. हमारे हिंदू भाइयों का एक बड़ा मसला जो मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं वो लाल दरवाजे की मंदिर का इशू है. कई दिन से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 करोड़ रुपया मंजूरी दी थी. मैंने श्रीनिवास यादव साहब से भी बात की है इस ताल्लुक से. श्रीनिवास यादव साहब ने कहा कि बराबर बैठकर करेंगे. वहां के जो हेड पुजारी है वो सारे लोग मुझसे मिलकर फिर से बोले हैं अकबर साहब कि प्रॉमिस हुआ था, सैंक्शन हुआ है, मीटिंग्स हुए हैं, अभी काम होना बाकी है, प्लीज उसको स्पीड अप कर जल्दी करवा दीजिए. और कल्याण मंडपम के लिए भी जो मनादिर में मंडपम की मंजूरी दी गई थी, कल्याण मंडपम की, वो काम भी पेंडिंग है. जरा उसको भी अगर आप स्पीड अप कर देंगे तो हमारे हिंदू भाइयों में भी ये बात आएगी कि ये गवर्नमेंट और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सबको साथ लेकर चलती है. और मैं ये कहना चाहता हूं पुराने शहर के मेरे हिंदू भाइयों से भी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर एक की नुमाइंदगी करती है. हमारा दिल और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं. जिस तरीके से मुसलमान हमसे आकर अपने मसाइल को पेश कर सकता है, हमारा हिंदू भाई भी आता है, पेश करता है. हम उनके लिए भी लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई भी लड़ेंगे और पुराने शहर को डेवलप करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी तरक्की को हम आगे लेकर जाएंगे. और मैं फिर से फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप प्लीज उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर कर दीजिए. इतने दवाखाने रियासत में आ रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है. मैं जानता हूं एक मेडिकल कॉलेज बनाना कितना मुश्किल होता है, एक दवाखाना चलाना कितना मुश्किल होता है. आपने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है. हमारी जानिब से हम पूरा सपोर्ट आपको करेंगे और आपके इस मिशन में आपको कामयाबी के लिए हम ताउन भी करेंगे, दुआ भी करेंगे. उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर को ले लीजिए और उसके साथ साथ चार मीनार का दवाखाना है, चार मीनार हॉस्पिटल का भी है, वो यूनानी एजुकेशन का, उस ताल्लुक से भी मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि उस पर भी गौर करें. और फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से फंड्स दिए जा रहे हैं माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए. सर, बोलने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को बंद कर दिया था. सर, आज तक भी वो रिकॉर्ड रूम बंद है. जब भी जरूरत पड़ती है तो हैदराबाद कलेक्टर से एक आदमी आते हैं, खोलते हैं, कागज निकालते हैं. इसकी वजह से काफी तकलीफ हो रही है सर. ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर गेटिंग डिजिटलाइज्ड, लेकिन ये रिकॉर्ड रूम बंद रहने की वजह से वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन भी नहीं किया जा सक रहा. मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप वो रिकॉर्ड रूम को खुलवा दीजिए, उसकी पूरी ऑडिटिंग करवाइए, नंबरिंग करवाइए. खोलने के बाद कौन से पेपर्स थे, नहीं तो क्या बोलेंगे सर, वो लोग बंद था इसलिए पेपर्स गायब हो गए. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप उसके ऊपर भी देखें. और रहा सवाल पुराने शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, जीएचएमसी एरिया में हमारे के डेवलपमेंट के ताल्लुक से सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई थैंक यू वेरी मच sir, on the assurance given by you, Honorable Minister for Municipal Administration, Mr. K.T. Ramarao Saab had called a meeting yesterday, sir. We had a elaborated discussion of 6 hours, sir, and I would like to come on record and go on record and say that it was a very फ्रूटफुल मीटिंग और कामयाब मीटिंग हुई. पुराने शहर की आवाम से कहना चाहता हूं कि इतनी मंजूरियां मिली हैं और इतनी बातों को कबूल किया गया है कि इंशाअल्लाह आने वाले कल में नए शहर और पुराने शहर में कोई फर्क नहीं रहेगा. पुराना शहर भी आगे बढ़कर जाएगा. मैं केटी रामाराव साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि 6 आवर्स मीटिंग हुई है. और फिर से मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के बारे में जल्द अज जल्द शुरू करिए. तयख्खुन दिया गया कल की मीटिंग में. फिर से कहूंगा, कल की मीटिंग में हमने जिक्र किया, तस्करा किया, बहस भी की. बहुत बड़ा मसला है पुराने शहर का और वो है नोटराइज डॉक्यूमेंट का.
सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया हाउस में कि ऑल द नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. मीटिंग्स आर गोइंग ऑन और बातचीत हो रही है, रास्ता निकाला जा रहा है. सर अंडर द GO 58 एंड 59 बहुत से पेंडिंग हैं और कुछ पैसे ज्यादा हैं, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि फिर से 59 और 58 का रिव्यू कर उसको खत्म करें. और ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू सर, आई वुड लाइक टू make a request once again, sir. Sir, about the Makkah Masjid restoration, sir, still the Makkah Masjid restoration work is pending. I request the government to kindly look into that and see that the work is taken up immediately, sir. और ये शाही मस्जिद यहां के जितने भी काम करने वाले हैं, इनको रेगुलराइज करने के लिए मुसलसल हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये भी काम को देखेंगे. और क्रिश्चियन भवन के लिए भी एक वेकेंट लैंड 2 एकड़ जमीन दी गई है, और इसके लिए भी मैं हुकूमत का क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूं. सर ये बैंक लिंक सब्सिडी लोन, सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. एज ऑफ नाउ मोर देन 2 lakhs applications have been received. So from last 5 years for this bankable schemes, the applications were neither called nor any loan was released, sir. तो अब हुकूमत ने दरखास्तें बुलाई हैं, जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फंड्स को रिलीज किया है. मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि जितनी दरखास्तें आई हैं, इन दरखास्तों को अगर हम सबको क्लियर करते हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट होना पड़ेगा. कम से कम आप एक 200 करोड़ रुपया अगर देंगे तो एटलीस्ट वी विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर सम मोर देन 30,000 एप्लीकेशंस फॉर दिस लोनिंग स्कीम. सर ये गाड़ियां देते हैं, टैक्सी, वो भी है वैसी रखी हुई है, और स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है. सर अर्लियर ऑल्सो सर आई हैड मेड अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट to kindly have a collaboration between the Minority Finance Corporation, NAC and NIFT can have a collaboration, and a NAC, National Academy of Construction, they have skill developmental programs, sir. One center is there in Old City. NAC का एक center है sir चंद्रायन गुट्टे में, मेरे एरिया में. Minority Finance Corporation can take over that center and run the classes and train the unemployed youth of Old City, so that jobs can be given to them, sir. तो मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें फाइनेंशियल कोई नहीं है. माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हम ट्रेन करते हैं बच्चों को, और स्टडी सर्कल्स के बारे में भी हमने रिक्वेस्ट किया था. एंड सर गोइंग फर्दर अहेड, आई डू नॉट वांट टू गो मच फर्दर, सर. लास्टली सर आई हैड रिक्वेस्टेड एंड आई हैड सेड अबाउट द इर्रेगुलरिटीज हैपनिंग इन वर्क बोर्ड, सर. माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए स्टेट का शेयर होता है. काइंडली रिलीज द स्टेट शेयर सो दैट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर माइनॉरिटी इज नॉट हॉल्टेड और डिलेड, सर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं हुकूमत का मुबारकबाद दूंगा कि हुकूमत ने बहुत ही कामयाबी के साथ रेजिडेंशियल स्कूल्स को चला रही है. रेजिडेंशियल स्कूल्स कामयाब हुए, रेजिडेंशियल स्कूल्स जूनियर कॉलेजेस में तब्दील हुए, और फिर ये जूनियर कॉलेजेस अब डिग्री कॉलेजेस में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा. उसके साथ ही साथ मैं कहूंगा कि स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है. टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज में कई वैकेंसीज हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर भी जरूर गौर करेगी. और आखिर में सर मैं I must also point out that not all eligible jobless youth in the state have been provided with jobs in the private or government sector. There are lakhs of educated and other jobless youth who are eagerly waiting for the unemployment dole of rupees 3,016 per month promised by the TRS, now BRS, at the time of 2018 assembly poll, sir. So however, the finance minister Saab has disappointed the state youth, and I don't find any reference about this in the budgetary allocation for this scheme in the 23-24 budget speech, sir. सबको दे रहे हैं. इस ताल्लुक से भी हमदर्दाना गौर करने की मैं अपील करता हूं, क्योंकि बेरोजगार
नौजवान बहुत हैं। और उसके साथ ही साथ सर, आई वुड रिक्वेस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर साहब टू क्लैरिफाई व्हेन दिस स्कीम वुड बी इनिशिएटेड एंड स्टार्टेड सर। और जितने भी मसाइल हमने उठाए हैं उस ताल्लुक से मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत संजीदगी के साथ हमारे उठाए हुए मसाइल पर गौर करेगी। और स्पीकर साहब, आपने जो मुझे मौका दिया है इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द फाइनेंस मिनिस्टर साहब for the spectacular economic growth the state had achieved despite economic recession, corona pandemic and the hurdles created by the central government. I do not want to repeat the figures cited by the finance minister Saab on the annual GSDP growth rate and per capita income during the last 8 financial years for 2014 and 15 to 2021-22. It is a matter of pride that the state GSDP growth is higher than the national GDP growth, and the state per capita income is also higher than the national per capita income ever since the formation of Telangana state, sir. For this, I congratulate the government, sir. The state has witnessed enormous growth in agriculture sector, with the paddy production increasing threefold from 68 lakhs ton to 2 crore ton between 2014 and 15 and to 2021 and 22. This has been possible thanks to the expansion of state irrigated area on account of commissioning of Kaleshwaram and other irrigation projects, as well as implementation of schemes for farmers such as 24/7 free power, Raitu Bandhu, Raitu Bima, farm loan waiver, renovation of minor irrigation tanks and procurement of agriculture produce by the state, sir. Telangana is the only state providing uninterrupted power supply to all sectors, as the power generation capacity in the state has been augmented from 7,778 megawatt in 2014 and 15 to 18,453 megawatt now. The per capita power consumption in Telangana at 2,126 units in 2021 was higher than the national average of 1,255 units. So there are many schemes and initiatives of the Telangana government, which includes Mission Bhagirath, Asra Pension, Kalyana Lakshmi, Shadi Mubarak, Arogya Lakshmi, Telangana Kuharita Haram, Residential School for Minorities and Backward Classes, Overseas Scholarship, Mana Oru, Mana Basti, Mana Badi, Dialysis Center, new super speciality hospitals, new medical colleges, KCR kit, Mission Bhagiratha, Palle Pragati, Patana Pragati, SRDP, T-Hub, TSI Pass, etc. Moreover, several schemes are implemented for welfare of Dalit, Adivasis, minority, backward classes, communities, sir. 1,177 crores. In the next financial year, that is 23 and 24, Telangana is to be provided rupees 21,471 crores as central devolution against AP share of rupees 41,338 crores. Sir, this means that the Telangana is getting only, sir, this is my observation, and I do all my research before saying anything, but at the same time, sir, through you I would request the government to correct me if I am wrong, sir. Sir, the figures which I have just read out, this means that Telangana is getting only 50% of what AP is receiving under central devolution. And it is not in the ratio of 40 to 58, sir. It is not in the ratio of 40 to 58% as stipulated under the AP Reorganization Act. Moreover, the AP is getting post-devolution revenues deficit grant from the central government. I would like to ask those people who are championing for Government of India and who are trying to divide the Telangana people by their provocative speeches and divisional politics. Instead of doing such politics, why don't you go and fight for this which is being done to state of Telangana? This would be the real service
if you fight and get back the funds, which are the rightful funds of the state of Telangana, rather than dividing the people, rather than, mixing all venom in the minds and hearts and thoughts of the people. Sir, in other words, Telangana is getting only 1/3 share, sir. 1/3 share, and residuary AP is receiving 2/3 of the share of central devolution compared to what undivided AP was getting as its share. This is the typical example of the grave financial injustice done to Telangana by the central government, sir. Sir, I may recall that when the 14th and 15th Finance Commission chairman and members has visited the state in September 2014 and February 2019, the AIMIM has made a representation to them. The AIMIM has made a representation to them, seeking higher devolution of central tax, share, grants, demand revenues, deficit grants for Telangana state in view of its special and specific needs as a new state. We have given a representation, sir. However, both before the 14th and 15th Finance Commission, Telangana government has represented memorandum claiming that the state would be a revenue surplus. State would be a revenue surplus state, and it would not need any revenue deficit grant. If I am wrong, I may be corrected on this also, sir. On the other hand, residuary had sought revenue deficit grant from both the Finance Commission. Sir, going further ahead, sir, I would like the Finance Minister Saab to tell us during the last 9 financial years in formation of Telangana state, from 2014-15 to 22-23, how many times did the state ended the financial year with revenue surplus? How many years, sir? So far, 9 state budgets were presented, projecting revenue surplus, but each time the state ended up with revenue deficit instead of revenue surplus. This is my research, this is my findings, this is what my team has provided, and I have gone through all the details, sir. Never, sir, the state has been revenue surplus, sir. Each time the state ended up with revenue deficit instead of being revenue surplus. Sir, the 16th Finance Commission is being constituted by central government now to recommend on the devolution of central taxes and duties over a 5 years period. I would request the Finance Minister Saab to make an honest assessment on state revenues so that the state can seek grants to fill the revenue deficit. This is an important point, sir. Sir, we need to have an honest assessment, sir. The objects of Telangana state and the government is to create job opportunities for lakhs of youth in the state, including the educated, unemployed and other jobless youth, while new opportunities have emerged for the youth in rural and urban areas, thanks to the various schemes and initiatives by the government and the rapid growth of the private sector. Telangana youth look forward to the government and semi-government jobs, sir. Sir, before proceeding further ahead, sir, I would just like to bring across few points about minority welfare budget, sir. I will not go into the details of the minority budget, sir. I'll go into the details when I would have gone and touched rupees 1,724.69 crores, sir. Sir, I thank the Minister Saab, but at the same time, I request Honorable Finance Minister Saab to kindly release the 4th quarter budget from the government under scholarships and other schemes, sir. 4th quarter का minority budget जो release करना है, इसको release करने की मैं आपसे दरखास्त करूंगा, sir. Sir, in the Shadi Mubarak scheme, sir, during this year, many beneficiaries are applied on the Shadi Mubarak scheme, sir. The number is 30,006 beneficiaries, sir.
Sir, and the last year pendency carry forward applications are 33,122, sir. The total is 63,128 applications, sir. Sir, I request the Honorable Finance Minister Saab to kindly clear all the pending and this year's Shadi Mubarak applications which have been approved. The number is 63,128, sir. So Minority Department has released an amount of 275 crores and additional budget of rupees 150 crores, totaling to rupees 425 crores, sir. So during this financial year, 27,634 beneficiaries benefited as on today, and balance 35,494 are awaiting for funds, sir. Finance Minister Saab, sir, we need an honest assessment of the state revenues so that the state can seek grants to fulfill the revenue deficit, sir. Sir, despite the poor track record of central government in providing central tax devolution and grant in aid to Telangana, the state finance minister exuded optimism and projects ambitious figures about devolution of taxes and central grants in aid. The shortfall in actual devolution of central taxes and grant in aid compared to the budget estimate is the main cause of revenue deficit, sir. That is the main cause of revenue deficit of the state. It is also the main cause for the shortfall in actual expenditure of the state government compared to budget estimate year after year. If I am wrong, I may be corrected in this, sir. For assistance, the Finance Minister Saab has projected the central grants and aid to be rupees 41,259 crores in next financial year, that is 23-24. In the current year budget estimate, the central grants and aid was rupees 41,002 crores, but the revised estimate is rupees 30,250 crores. Honorable Speaker, sir, it is to be noted that in the financial year 21-22, the budget estimate central grants and aid was rupees 38,669 crores. The revised estimate was rupees 28,669 crores. But the actual state grant in aid received by the state was only 8,619 crore. That is only 22% of budget estimate. Only 22%, sir. Sir, this is how the shortfall occurs in the actual expenditure compared to the budget estimate and revised estimate of the state revenues and expenditure, and this is how the revenue surplus in the budget estimate and revised estimate actually turns out to be revenue deficit in the account. That to release all dues up to 2022 spring and fall season students, rupees 152 crores is required. So I request, sir, अगर आप 152 crores अगर रिलीज कर देते हैं तो सारे के सारे 2022 स्प्रिंग एंड फॉल सीजन के स्टूडेंट्स तक पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वाहिद रियासत है जहां पे ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है बीसी स्टूडेंट्स को, एससी स्टूडेंट्स को और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। मैं शुक्रिया अदा करूंगा गवर्नमेंट का कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इसका आगाज हुआ। ये अच्छी है, इसमें थोड़े बहुत तो भी रिलीजेस कर दीजिए ताकि बच्चों को कुछ फायदा हो सकता है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के बारे में भी कहूंगा कि थर्ड क्वार्टर बिल आर पेंडिंग, एवरी मंथ 5 crores इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीजिंग द ऑनरोरियम। मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि गवर्नर एड्रेस में जब मैंने जिक्र किया था इमाम और मौजूनों के उनकी तनख्वाह के ताल्लुक से, तो मिनिस्टर साहब ने फौरन रिलीज किया। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का, मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ ही साथ यह भी जरूर कहूंगा कि एन अमाउंट ऑफ 54.90 crores रिलीज टुवर्ड्स ऑनरेबल सीएम्स अश्योरेंस एंड अबाउट अनीसुल गुरवा सर। अगेन आई वुड से कि अनीसुल गुरवा की बिल्डिंग बन रही है, अच्छी बन रही है, मजलिस की नुमाइंदगी पर जमीन दी गई और मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरी भी दी गई और अनीसुल गुरबा की इमारत तैयार हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द अज जल्द
अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का, टीआरएस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी नुमाइंदगी पर इस्लामिक सेंटर के लिए भी जमीन अलॉट की गई। इस्लामिक सेंटर की जमीन बहुत ही कीमती जमीन है। गंडीपेट के पास जमीन दी गई 10 एकड़। अगर हम वो जमीन की कीमत ही अगर ले लेंगे तो वो 50 करोड़ से जायद की जमीन होती है। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जल्द अज जल्द वो कल्चरल सेंटर का तामीर का भी आगाज होगा। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा और दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब का कि पुराने शहर का दौरा कीजिए। जामे निजामिया में ऑडिटोरियम कंप्लीट हो चुका, मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपये से जामे निजामिया में एक बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम की तामीर हुई है सर। एंड स्टिल दे टॉक अबाउट तेलंगाना गवर्नमेंट्स बोरिंग्स। It is, I would say it is really surprising. And I would like to come on record and say that they are stopping the progress and the development of the Telangana state by not giving the due share of the Telangana state, I would say. We have ended up in losing, sir. The reason why I am mentioning this is that, sir, I was the one in this house who was against GST, sir. Sir, earlier we had so much of taxes and all which used to come to state. But after GST, sir, everything is going to them. What is the states getting, sir? And that too, many a times, there is a delay in that. And going further ahead, sir, the finance minister has also lamented the central government has broken the tradition of implementing in toto the recommendation of the Finance Commission. By not accepting these recommendations, the central government denied Telangana its due share in Finance Commission's grants also, sir. Sir, I would like to point out here that the state share in devolution of central taxes fixed by the 15th Finance Commission is quite low. And this itself is the cause of gross injustice to the Telangana, sir. When the United Andhra Pradesh was reorganized with the formation of Telangana state, the undivided state share in central devolution has been in proportion to its population and other indices. Now, Telangana share in the central devolution of union taxes and duties is only 2.102 compared to the residual AP share of 4.047, sir. So this is a very important point, sir. Sir, under the AP Reorganization Act, the assets and liability of the state and state public undertakings are to be divided in the ratio of 58 and 42, sir. That is 58% of AP and 42% of Telangana, sir. This is well clearly mentioned in AP Reorganization Act, sir. Sir, in 2021 and 2022, Telangana got central devolution of rupees 17,496 against the AP share of rupees 33,376 crores. Sir, in the year 22 and 23, sir, Telangana received rupees 19,668 crores against AP's figure of 38,177 crores. This additional budget of 150 crores under the Shadi Mubarak scheme and all the pending applications will be cleared, sir. So through you, I request the government to kindly release 150 crores. If 150 crores are released, I am sure all the pending applications sanctioned can be cleared, sir. The scholarship maintenance of tuition fee MTF, sir. Sir, as on today, 13,78,752 students have benefited since the formation of state, and 455.50 crore were spent under this scheme, sir. 455.50 crores have been spent. Sir, I thank the government for this, sir. So allocation of budget of rupees 60 crores for this year, Minority Welfare Department released an amount of 45 crores and till now 19.597 crores has been incurred as expenditure and amount of 17.75 crores is pending at Finance Department and maintenance of tuition fees, sir. Sir,
Sir, at the same time, Honorable Speaker, sir, the Government of India में एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाती थी सारे हिंदुस्तान में। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया गया मौलाना आजाद के नाम से, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खत्म करती है, तो आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी आगाज अगर स्टेट में करेंगे तो इससे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा, रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस और आरटीएफ में एन अमाउंट ऑफ ₹67.68 crores is pending at finance department under reimbursement of tuition fee RTF. I request that this amount may also be released, sir. Sir, about the CM overseas scholarship scheme, I thank the finance minister for releasing some funds with which we were able to clear the old dues. The students who had completed their courses and in spite of completion of the courses, their fees were not released for overseas scholarship, but Honorable Minister Saab had released 36 crores with which we were able to clear, sir. But at the same time, sir, I request that. Sir, Honorable Speaker, sir, the Telangana government has also been making higher projections about the central grants for various central and centrally sponsored schemes. However, the central government has been reducing the outflow of funds of the state through central schemes and centrally sponsored schemes by scrapping some of these schemes, entrusting some schemes solely to the state and changing the pattern of central and state share. For remaining central schemes, Telangana, like other states, has no choice but to restrict the expenditure on the central schemes to the quantum of assistance to get from the central government. NREGA and backward area development program are the examples of reduced central assistance. So as I have been repeatedly pointing out while speaking on the state budget every year over the last 9 years, the state's finance woes are mainly on account of central government's tight fist policy towards Telangana. AP has been doing better in terms of state finances on account of higher quantum of central taxes devolution, sir. On account of higher quantum of central tax devolution, sir. Central grant in aid, revenue deficit grant and assistance for central schemes. So, Honorable Speaker, sir, a matter of concern is the increasing debt burden of the state. As per the Telangana budget in brief document, the state public debt has risen from 2.44 lakh crore in March 21 to rupees 2.38 lakh crore in March 22. By the end of current financial year, the public debt is set to increase to rupees 3.23 lakh crore, and this will rise to rupees 3.57 lakhs crore by March 2024. It is true that capital expenditure of Telangana state has gone up substantially, and to finance this spending, the state has to resort to borrowings, partly because of shortfall in central tax devolution and grant in aid. The per capita debt in current financial year will reach rupees 77,116. So every resident of Telangana's estimated population of 4.18 crore carries this debt burden, sir. So there are many other issues regarding the state finance which can be highlighted during the debate on the appropriation bill on Sunday. Sir, unlike the governor's address which had no reference to central government's stepmotherly treatment towards Telangana, Harish Rao Saab has talked elaborately on the issue of hurdles created by the central government to the development of Telangana, sir. So during the current year, the state budget has estimated the borrowings to be rupees 53,970 crores, but the central government unilaterally imposed a cut of 15,033 crores and reduced the state borrowing limit to rupees 38,937 crores, though Telangana borrowings have been well within the limits of FRBM Act.
Sir, I would like to point out that the FRBM Act applies equally to the central government and the states. However, the BJP has been selectively targeting the non-BJP ruled state by restoring to unilateral restrictions and their borrowing limit under FRBM. The central government is borrowing, which is equivalent to fiscal deficit, is 6.7% of the GDP in the financial year 21-22, and 6.4% in 2022 and 23, and 5.9% in the next financial year. The comparative figures for the Telangana state financial deficit is 4.06 of GSDP in financial year 21-22, 3.21 in the current year, and 3.5% in the next financial year. If we have to see the borrowings of the state government and the central government, Telangana is far less, but still the central government is restricting and stopping the Telangana state from borrowing, sir. Sir, I was going through the union budget for the year 23-24. Honorable Speaker, sir, I was really surprised when I was doing the calculation, the total borrowings of the Government of India, the total borrowings, per day borrowings, sir, per day is 4,895.38 crores. 4,895.38 crores per day they are borrowing. And the Government of India is paying an interest. The Government of India is paying per day interest of 2,958.82 crores.